now you guys. I really appreciate introduction of each one of you because that is how we can interact. And this is not a CBT like computer-based training. This would be more of interactive sessions. So I require everyone to speak up and come with the queries, come with the jargons, or come with the issues and concerns which you feel that should have been addressed priorly, but it's not. Then now I want this to bring in this class. Okay, तो मैं चाहता हूँ कि इंटरेक्टिव रहे. So yes Chidambar, आप कुछ बोल रहे थे, please continue. Yeah. Hello, Vaibhav. Hello, everyone. So, Rajuddin, my name is Chidambaram. So, I have Hmm. 13 years of experience as an IT engineer in different Hmm. technologies within Microsoft. So, I've been in like global help desk admin, start with the career and so on. I worked as an JML engineer, L2 engineer, Hmm. migrations of Exchange teams, and I worked in recently in Microsoft project for 2+ years as an L3 engineer for the MS Teams engineer in a Microsoft project. Hmm. And presently now I have been into another project where I'm an infrastructure lead, technical lead. So I'm Hmm. lead from 2020, but Hmm. technical infrastructure lead in this particular project, managing front end EUC support and an escalation Yes. engineer. But the other Hmm. thing is I have a limited access of SCCM. So Hmm. from past 2 or 3 years, I'm in the front end working, doing the refresh and everything else. I understood SCCM in the front end part, but I'm really interested to move into Intune because I'm Hmm. already an M365 engineer. So when I tried to go to an interviews and everything else, I understood that SCCM is a base for Intune as well. So they are Yeah. asking both SCCM and Intune and also the migration part as well. So I am following Viber from mostly more than 4 years plus. So Hmm. I see him as a manager and also as an individual, growing Hmm. himself and also making grow the other people around him, which is very I appreciate a lot. And I sincerely feel him like he's my guru, because I Of in this course. Of technical world, course. yeah, in this technical world, I see very little people helping others and also growing them with others as well. So the when Viber launches the enrollment for the this one, at the parallelly I Huh. was also thinking that I need to set up and start SCCM and Intune, which I Hmm. at the same time Viber also posted that I am starting the training. So it was the right time for me, and I thought this is a good opportunity to connect with Viber and learn about SCCM and Intune. That's about And myself. also we will, yeah, thank you for your appreciation about Vaibhav, and share your experience and all these things. It is very good for us to listening, and the adopting the things. One more thing, so we will help you to other things like what kind of questions are arise in the interview, and how to you have a 13 years of experience. That is much enough, bro. Having 8 years of experience, तो Okay. ऑब्वियसली आप ज्यादा एक्सपीरियंस हो और हमारे काम भी आ पाओगे, हमें गाइड भी कर पाओगे, और कहीं अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती भी है तो आप वहां भी हमें देखोगे, तो ऐसा हम एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो एक अच्छी शुरुआत करते हैं, अच्छे से सीखते हैं, क्योंकि वैभव भाई वैसे भी अच्छा बताते हैं। ही हैड Yeah. अ Thank ग्रेट you. नॉलेज। Yeah. Thank you. ओके वैभव, यू कैन स्टार्ट ब्रो, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मेरे ख्याल से ऐसा मैं समझता हूँ कि अगर हम सिखाने वालों को, जो भी सिखाता है हमें, चाहे हमारे टीचर्स हैं स्कूल में, कॉलेज में, या जहाँ भी, जो सिखाता है वो हमेशा ऊपर होता है, और वही हो आप हमारे लिए। तो एक हमें बेहतर आप ट्रेनिंग दीजिए, ताकि हम अच्छे से प्रोग्रेस कर सकें, और आने वाली जो हमारे पीछे पीढ़ियां हैं हम उनको भी कुछ अच्छे से सिखा सकें, अच्छे करियर के ग्रोथ हम दे सकें उनको भी। थैंक यू। I agree with Chidambaram. So I can speak Hindi, but very little, and I understand Hindi. So Don't worry, so you can. yeah. Actually, I So live I in agree with Hyderabad past Chidam. 1 years, so I know the Oh, things of that. So you can, I can I'm from understand the Telugu and all. Hyderabad. Okay. I'm from Hyderabad, and my name I'm is also Vimla. from Hyderabad. Yeah. Oh, Ah, where hi. Hyderabad? In which areas Hyderabad, Bimla? I stay in Kukatpalli. I'm living in Gachibowli. Ah, okay, nearby. So you are Okay, technically currently, from but Hyderabad, or it's Andhra? I'm born and brought up from Hyderabad, but Hmm. currently staying in Bangalore. That's great. And where are you from, Sheila?
So I am from Hyderabad as well. So my Ah, hometown is Hyderabad. So I'm born and brought up and everything in Hyderabad. But presently I'm in UK right now. So came on a oh, short ICT. ah, that's great, man. Nice. Yeah, thank you So I for this agree with particular project. Yeah. Chidambaram, whatever he say about Viber. Even I am following since Viber started this um, job portal. I was in that. I was referred by one of my friend to this portal. So I didn't know that time that Viber is an SCCM engineer and or SCCM lead or something. So I was not able to communicate much, just browsing the jobs posted by Viber. So later I came to So, know. I got some yeah, that's great. Don't worry, we will, we will keep touch yeah. in So each other, later I and got we to will know that share Viber. things. Yes, yes. So I got to know Viber teach classes and all. I just saw once or twice in LinkedIn and all. So then I thought like I have in total 13 to 14 years of experience, but into SSM it is just 4 years. Though Hmm. 4 years, but you never know in technology. However, we are like, but still there is some lag. So There is some I lag, need or the most, the common issues from the SSCM. It's a sometimes very what old happens. technology. Correct. Sometimes what happens very it looks like a big issue, but the resolution will be very small. So Very small, yeah. that yeah, so that I am missing somewhere. So I talked personally to Viber, so he just so I thought, okay, let me join and refresh again my subject. So that's not wrong refreshing. In this field, like we have to be refreshed day in day out. So I thought, let me refresh again No, no. everything completely, and For then the move my career. refresh, refresh, and the for starting and refreshing the thing, the Bible is good, Yeah, man. if we communicate, About to correct. start. If we communicate with more people, we'll come to know like how they do and how like we get communicated and we get knowledge sharing. Yeah, so that's the reason. Yeah, I wanted to join and I'm here. Hmm. Thank you. Yeah, that's good. Thank you. So To kind of Bimala, you. so yeah, okay, Baba, you can start, bro. Thank you so Sorry. much and so kind of you guys. Abhi, I just checked like there were 6 people who were joining in this class, but again, uh, I someone has said me once कि कोई भी चीज़ अगर किसी को फ्री में मिलती है, so they don't value of it. Okay, Yeah, so I thought of starting this, free and all, but later on, I mean, I just did it on a small group. Then I realized कि नहीं लोग कोई join कर रहा कोई नहीं कर रहा है. They're not actually paying much more attention. Then when I met with Rajuddin, then he said कहीं ना there is a mindset कि when you pay something ना you start keeping a value of it, and you start putting more efforts to gain, or maybe you get the money whatever you spent, you equivalent to that amount of just they wanted to get it कि जितना मैंने पे किया मुझे उतना मिलना चाहिए या उससे ज़्यादा मिलना चाहिए. So that was the only concept, and I mean, I thought of bringing it. Now I see like 9 people there. They ask me to join, but when there is a fee and all terms, they're being little hesitant, or they said like, ठीक है आपका next batch में मैं join करूँगा. Yeah, I'll take some time to pay right now salary and all those stuff. So many things, but we are not concerned about those. The only concerning point is how are you regaining your knowledge. Okay, so if your knowledge okay, let me just exit out. If your knowledge is polished, so money is a byproduct. Okay, it will automatically come. But if you are not putting efforts, if you're not putting value on your knowledge, you will be stagnant. Okay, you will be always at the same place जहाँ पे आप थे वहीं पे रह जाएंगे. अगर see, now technology has been, it's been so volatile. अभी AI आ गया है. So many things people are talking कि co-pilot आ गया है. I have dedicated session for co-pilot also कि कैसे use करना and all that. So everything I'm trying to put and enhance your knowledge, so you can better fruitful your productivity. You can make your efforts less, but make your tools to work for you. Okay,
Now I think this is the right time to gain the knowledge, polish it, and make the jump. Okay. So I would not take much time. Quickly, I'll share the screen and we'll start setting up the lab. Okay. So Chidambaram will take your machine today, Yeah, sure, and sir. let me know, guys. And thank you so much, Chidambaram, for being at UK. You lost your bus and all, then still you managed to join this session, which is really appreciated. I really liked it. Ye- Yeah, thank you, sir. Actually, whenever there would be a particular time there, sometimes it Ah. will become 2 minutes, three No, minutes no, it late, happens. and I there was is a there lot in of London, walking. and they are very particular about the timings Yeah, and all. So I do miss. I did miss one. I had a bus from London to Sweden, and I missed that. And thankfully, there was a second bus, another was going to be there. yeah. So, ठीक है. So So, Chidarma, what about the weekend? Is there any particular leaves they are provided us? I mean, Saturday, Sunday is there in UK. No, here after five Friday, no one will work here. Even if you give, they will Ah, say we'll see it later on Monday. Even if the server is ah. down. So yeah, Yeah, that's so for me, great. they are Friday, very Saturday is particular a big about shot. their timings. They are very particular about their No, here week it is off. completely different. Only Uh, their personal things comes first. Well-being mhm. comes first. Later, everything else. There was a server down one time. So there's a big story. I'll tell you later. No, no, Yeah. yeah, we'll take it Sure, offline. bro. Yeah, Okay, please share. we'll take Okay. it Yeah, you offline. can start, Babo. Thank you. Okay, so we'll talk about the MECM lab setup. Okay, Uh, so Vaibhav, are you able to see my screen? I've shared the screen. Or no, I'm just sharing my screen. Let me complete, then I'll okay, ask you to share. Okay, just okay, a second. okay, I think okay. that's why I'm Sorry. not seeing. Yeah. Uh, so let me quickly share my screen, and then let me give you the basic overview. Okay. Okay. So today we'll talk about the MECM lab setup. If you missed the first session, please go through in the Classroom app. There is already a YouTube URL given, so you can refer that video what we talked. In this video, we'll be particularly talking about the lab setup and what things do we require and how would we set up, what is the infrastructure, everything we'll talk about it. तो आज लैब सेटअप के बारे में बात करेंगे. तो लैब सेटअप के लिए लैब में क्या रिक्वायरमेंट Babo, होनी चाहिए. sorry, Mhm. sorry for the intervene. This lab setup is also important for the production environment. I mean, this is your in-house, it would be like on your in-house. I would We say it can. is in enterprise. In enterprise, the methods and structure, setup, everything remains same. Okay, it's just a matter of you are doing it in enterprise, and it's now here you're doing in your home laptop. Okay, nothing changes Okay, as much. okay. You can So, carry on. okay. Thank you. Okay, thanks. So in lab setup requirements, so what do we require? We require a Windows 7 at least, Windows 10 or 11 operating system. We require at least minimum of 12 GB of RAM. Okay, and I know like each one of you having this minimum requirement met. And quad core processor is very generic. Every laptop will have, and this is very crucial. At least I want 200 GB free hard disk space to set up this lab. Okay, so please ensure that you have these requirements met. Then हम आगे further इस पे बात करेंगे. ठीक है. So now how will be the architecture? I'll just define it. So हम तीन virtual machines बनाएंगे. Okay, एक बनाएंगे domain के नाम से, एक बनाएंगे MECM primary site के नाम से, और एक बनाएंगे client one. ठीक है. तो जैसे डोमेन के बारे में बताएंगे, तो डोमेन क्या है, इसके आपका डोमेन कंट्रोलर होगा, इस पे डीएनएस होगा, डीएचसीपी होगा. ठीक है. और इस पे बाकी का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो करेंगे. MECM प्राइमरी साइट पे हम SQL सर्वर इंस्टॉल करेंगे. इस पे मैनेजमेंट पॉइंट इनेबल करेंगे. इस पे रोल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट रोल डालेंगे. इस पे एसएमएस प्रोवाइडर रोल रहेगा और एससीपी. ये सारे रोल्स हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं. सो इफ़ यू नॉट अवेयर यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू दैट. ठीक है. और एक मशीन बनाएंगे क्लाइंट की जिस पे हम विंडोज़ 10 इंस्टॉल करेंगे, और
इस मशीन को हम अपग्रेड करेंगे बाद में विंडोज़ 11 में, ठीक है। तो ये होगा आर्किटेक्चर, और सारे जो भी सेटअप होंगे वो हमारे नेटवर्क कनेक्शन सेम ही रहेगा, और इसी कनेक्शन पे हम सारे लैब को सेटअप करेंगे, ठीक है। वन मोर थिंग आई एम जस्ट एडिंग इट अप, कि at last we'll try to set up a secondary site, okay, which will also be connected on the same network. Fine. So this will be the architecture, and further we'll talk about the downloading and installing VM architecture. Okay. So now I'll do one thing. I'll stop sharing, and I'll send you a URL which is a drive link. Okay, you can simply so Chidambaram, you can share your screen Yeah, sure, sir. and check on the chat box. If you can download it directly, that is well and fine. If not, then you can refer to this Google Drive, and you can download the setup directly from here instead of downloading it from outside. Okay, so yeah, click on download. So, are you able to see my screen? I can see it now. Yeah, My you can sir? download Yeah. it. Yeah, Yes, yes. we can see that. Yes, yes. So you clicked on download anyway. Yeah. I've done it, and now it is Okay. downloaded as well. I'm installing it now. Okay, perfect. Okay, before that, I just wanted to check what about the configuration? Could you just So, share and show? Can you just go to start and just type system information, or you can just type disk management, just to show that you have everything intact. Like हार्ड okay. डिस्क स्पेस हो गया, आपके सिस्टम का क्या है, क्या हो गया ये, आई थिंक हंग मोड होगा। So I've created 300 GB for the space separately for Yeah, this. I'm not able to see your screen somehow. It's coming as a Okay. green screen. Uh, Let me share You it share. again. Yeah. Chrome tabs, entire screen. Sorry. Okay. I clicked on just Windows. Now I've clicked on entire screen. Ah, now better. Okay. Yeah. So I've created 300 GB space Yes. for Okay. this. Perfect. Correct. Yeah. Yeah. And the This is system information, you can also show the what is your system information, like how things are there. Just type system information, or just yeah, click on that. So basically, you have installed 32 GB RAM, okay, and you have 64 bit of operating. Rest of you have enough storage, so you're not any problem. And again, we are on i7, okay. So yeah. Actually, I've customized this couple of months ago just to make a lab, and that okay. was the right time where I got your message saying that we will start the training. Oh, great, great. So I think you and Rajuddin are on the same time. Rajuddin भी उसी वक्त lab setup करने के plan में थे, and then we thought of discussing the session शुरू करते हैं. ठीक है, good. So we are good enough. Now we'll proceed further with the setup. Okay. तो architecture जैसा कि है मैंने बता दिया कि हम तीन machines parallelly install करेंगे. One, we will have a domain. Second, we will have MECM primary site, and third, we will have a plain Windows 10 client machine. ठीक है. So let's do one thing, minimize everything and launch Oracle VirtualBox. सर एक्चुअली ये इंस्टॉल करते समय ये एरर आ रहा है. क्या error आ रहा है? How is it? So Maybe show space issue. I think there is a
space issue, but let's check. So when I click on this, it's saying this app can't be because it caused security or performance issues on Windows. A new version may be available. Check your software provider. So it is asking for the a little bit more newer version. Okay, let's do one thing. Go to Google and just search for Records VirtualBox. That's not a problem. It may be Okay. it's an old file I was using, so let's download the fresh version. I'm not getting much time to upload it on my Google Drive, so let's do it. Let's do the fresh install. Click on it. Though it's free, so don't need to worry about anything. Okay. So don't admit anyone, please. Uh, Sir, accept and download or yeah, accept and download. Should be win fine. Just check. 332. Is it still downloading? I don't think this is the right file. Just check. It's very small. It's very tiny. Can you click on in the left hand side? Just उस पे click करना Windows पे. Windows Sir, host. First one. okay. Click on it. Okay. And now save it. ये है right file. Yeah, I think so. ठीक है. Now let's. Yeah, this one That's the right one. Okay. Run it, just Arnie. come on. Hmm. End it. Why it's ended? It is asking the some .NET file. Let me. Are you doing it on your hard drive or is it on the virtual one that you showed me yesterday? No. This is on the laptop itself, on the hard drive itself. It Okay, is so it is asking asking for that package. Visual C++ 2019. Right, that is not there on the machine, I believe. So just quickly go to Google and download this. Yeah, sure. So this training is also helping you. जैसे कभी आप Visual फॉर C++. एग्जांपल किसी प्रोजेक्ट के लिए गए और आपको नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं वहाँ पे, तो यू विल बी फैमिलियर कि क्या हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है या क्या एरर आ रहा है आगे चल के. So you'll be more familiar. So this is like a core architect वाला काम है. Okay, हाँ, click on this. Let's download. Then 13, 12, 64-bit. Let it download.
And do not allow anyone. I'll do the admission for anyone who's popping up. Yeah. Sir, it is asking for restart. Shall I, if I restart, I If you need to restart, then rejoin the. you will be disconnected, right? Okay. So do a restart and we'll wait on the Yeah, call. yeah, sure. Thank you. So these are the issues which arise when you start setting up things. So Rajuddin, I think it was festival today, and thank you. You joined for us. No, it's a very important for me rather than my festival. It makes money, bro. Really appreciate that. Thank you so much. नहीं मैं सोचा था कि आज क्या पता आप नहीं ज्वाइन करो या और चिदम्बरम भी लेट थे तो आई थॉट ऑफ कैंसलिंग इट लाइक फिर मैंने कहा नहीं क्या पता देन लास्ट मिनट ही मैसेज मी कि नहीं आई एम देयर आई लॉग इन एंड देन वेबला का कोई कंफर्मेशन नहीं आया तो आई थॉट ऑफ कि हाँ लेट्स डू इट No, 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 no. I'm एट trying to have to जाएगा join तो this I'll- call, man. That's important for me, for my life, for my career, and all these things. Actually, yesterday, what happened? Actually, exactly, my mother is not well, so I just Hmm. sit with her and try to relax. You know, the age is Yeah very. understood They both are cross 75 almost. So Hmm. No, that's fine. At least you're there to take care of them, which is very nice in this age. we are very, unfortunate for this scenarios, bro. We can't do much. That's life. That's part of life. I mean, you, me, everyone will stage in that, कल age of कल पापा that. बोले तो मैं बोला कि आप ही ने बोला जाओ बाहर पढ़ने, तो चला गया मैं। अब चला गया तो फिर अब क्या, कुछ रह तो गया नहीं बोलने के लिए। कह रहे हैं ठीक है, तुम्हारी जिंदगी तो बन गई ना। मैंने कहा हाँ सही है, सबका है भाई। चलो अच्छा है ठीक है ना एट लास्ट हम एज अ पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि भाई हम माँ बाप हाँ का नाम और क्या, रोशन करें और क्या। और उनको जो और मैंने हम मतलब इस एज में जितना नहीं, ज़्यादा मुझे हो सके खुशी भी है देना कि चाहिए ये चीजें हर किसी के हिस्से में आती भी नहीं है वैभव भाई। माँ बाप का सेवा समझ लीजिए ईश्वर की सेवा है, और ये हर किसी को मिलता भी नहीं है। हमें मिला है तो हम वेरी फॉर्चुनेट। Okay, Chidambaram is back. Okay, so Chidambaram, you may share your screen. Fine. Let's launch it. So Viber, one thing like, so if we wanted to partition the disk, or like what prerequisites like to set up a lab? I'm sorry, I just missed it in between. क्या question था फिर से बोलिए? No, to set up a lab. So what are like the main prerequisites, the disk partition, or so I understood that the domains and all what we have to No, no, do. But I'll how tell can you we? all those. I'll tell it on the screen. Okay, when we are setting it up, we'll do it. Okay, okay, Set sure, up sure. with Sir, you. Vaibhav I sir. Click thought on yes. you already discussed. Chidambaram, Yeah, click on yeah. yes. Okay. Hmm. Click on Historical yes. virtual box. Find next. Virtual box. Yes, next install. Because I have the Hyper-V, so See, I had earlier, I mean, I did have experience, but Hyper-V, I had issues with the network connectivity and all those stuff. So VirtualBox, though, is a free, you don't need to uh, go to an advanced mode, turn on the features of Windows and all, enable that Hyper-V, or go to PowerShell and run and enable that in background. मेरे हिसाब से VirtualBox is a free and it's very easy to use, it's very convenient और कम टाइम में जल्दी सेटअप हो जाता है. Okay.
So Hyper-V मेरा थोड़ा सा I mean for me it didn't work. Connectivity का थोड़ा issue आता है उसमें. So personally I feel कि VirtualBox is quite easy. Okay, so did you see how did we install it? It was very plain. It was very basic. We just need to do click next 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 और कुछ करना नहीं है. Basic mode में रखना है, ठीक है? Now we are going to set up first our server, which is called domain. Okay, so click on new. सर ये बेसिक मोड एक्सपर्ट मोड है, कौन सा वाला सेलेक्ट करना है? Leave it as it is. कुछ change करने ओके की जरूरत नहीं है. Click on new. ठीक है. Before doing that, hold on. Before doing that, let's do one thing. Fold इसमें जाना, अपने folders में जाना and go to C drive या अपना folder खोलो. Just go to where you free feel to create this. D drive में space है. सर डी ड्राइव पूरा 300 GB है, डेडिकेटेड फॉर ठीक दिस है. लैब ओनली. अच्छा परफेक्ट. तो एक काम करो, डी ड्राइव में एक फोल्डर बनाओ, ठीक है? उसको उसका नाम दो एम ई. एक फोल्डर राइट क्लिक करो, हाँ, क्रिएट न्यू, न्यू फोल्डर, नेम इट MECM स्पेस लैब LAB. ठीक है. अब इसके अंदर जाओ, डबल क्लिक करके इसके अंदर एक और फोल्डर बनाओ, वर्चुअल स्पेस मशीन. वर्चुअल स्पेस नहीं, वर्चुअल स्पेस नहीं लिखना, वर्चुअल और देन मशीन. कोई जरूरी नहीं है कैप्स में लिखना, नॉर्मल भी आप लिख सकते हैं. वर्चुअल देन मशीन. I think we lost you, या Chidambar. या यस सर, नाउ आई कैन हियर यू. Okay, please share again. हाँ, स्पेस निकाल दो, वर्चुअल मशीन है सिर्फ. It's not a space there. ओके सॉरी, अच्छे No, स्पेस my bad. मशीन. It's virtual and then double click on it. Double click, create another folder. We are Make unable it, to see your make a, screen, I Chidam. can see it now. Maybe I can see it Uh, now. Maybe it's might be the network issue is in my area. maybe Maybe. network issue. Just Is there you are recording this session, Vaibhav? I'm recording. I'm recording. So that's Just type great. it Don't worry. domain. Yeah. Just type it domain. Make this folder name is at domain. Vimla, can you डोमेन. see it? Vimla, you there? Can you see this? I'm able to see it. Okay, perfect. Domain, हाँ. Then make another folder, not in this domain. बाहर बनाओ एक folder, उसका नाम रखो MECMPS. नहीं, इसके अंदर ही MECM lab के अंदर जाओ. हाँ, create one more folder, one and virtual machine. इन वर्चुअल virtual मशीन के machine अंदर के जाना है. हाँ. ओके Then ओके, इधर. make a folder MECMPS. MECM. PS is primary site. ओके, प्राइमरी साइट. PS is in one word. ओके MECMPS in one word. ओके. ठीक है, परफेक्ट. एक और फोल्डर बनेगा क्लाइंट 1 के नाम से. नॉट इनसाइड, बाहर ही. डोमेन हो गया एक सर्वर, दूसरा MECM हो गया. अब नाउ क्लाइंट 1. क्लाइंट 1. ठीक है. ठीक है, परफेक्ट. नाउ गो टू योर वर्चुअल बॉक्स. सर सेकेंडरी वाला नहीं चाहिए फोल्डर? सेकेंडरी. नहीं, वो बाद में हम बनाएंगे, वो बाद में करेंगे. गो टू योर वर्चुअल बॉक्स. Please mute, not speaking. Now go to VirtualBox. VirtualBox जो Oracle VirtualBox install किया हमने, उस पे जाओ. Okay. Now here in the first one, just give a name as domain.
Okay. Now in the folder, just locate the folder which says domain. Okay, it's in Okay, D drive. got it. Just domain. Locate in this virtual box. You placed it. That's fine. ठीक है ठीक है यहाँ तक हो Ye- गया. Now Okay. go to type में Windows Microsoft Windows है. Fine. In version, just change it to Windows 2019 64-bit. Check if that is there. Scroll down. Windows Server 2019. Right. Select that. 64-bit. Fine. Yeah. Click on now. Next. Sir, ISMS कुछ नहीं है ना? Not selected. अभी we'll download later. Just put Okay, that. okay. Next. Hmm. Shall I click on next? And Acha, one more thing is when we're trying to set this up, अभी यहाँ पे RAM पूछ रहा है, right? तो yes. RAM के लिए 2 GB is enough. But if you want, you can definitely increase to 4 GB. ठीक है? तो यहाँ पे just you can put 4096. ठीक है? In base memory. 4096 हाँ. and ठीक है? CPU. And हाँ, 4096 is simple and leave no that don't change anything there. Just Okay, click on okay. next. That's fine. CPU is fine. Okay, and 50 GB is enough. That's not a problem. Okay, if you want, if you have a space, you can increase that to 100 GB. Up to you. Otherwise, we are good with 50 GB. Okay, click Okay. on next. Okay, now to finish. Okay, fine. Now go to storage. Okay, now one more thing. I think let me send you this ISO image link. Okay, wait a second. One more thing. Just go to this general. Just go to general. Okay. Go to advanced, basic, advanced. Sir, Okay, that's advance. fine. Okay. Fine. That is fine. Go to system now. System पे जाओ. Uncheck the floppy. ठीक है. और ऑप्टिकल को सेलेक्ट करो, हाईलाइट करो और साइड में एरो आएगा उससे अप करो उसको, तो फर्स्ट पे वो चला जाएगा ऑप्टिकल. ऑप्टिकल को क्लिक करो, हाँ. हाईलाइट आ गया. फिर हार्ड डिस्क को सेकंड पे रखो, फ्लॉपी को नीचे रखो. फर्स्ट इज ऑप्टिकल, सेकंड इज हार्ड डिस्क. ठीक है? So, okay, boot series हम select कर रहे हैं ना sir? यस एग्जैक्टली. तो बूट Okay, में क्या होगा, पहले हमारा बूट होगा आईएसओ से, राइट. दूसरा okay, हार्ड डिस्क okay, हमने चूज किया. okay. ओके. सो विमला, आर यू डिस्कनेक्टेड? आर यू देयर नाउ? Yeah. ओके Yes, I am there. Yeah. ओके. Okay, I'll do one thing. I'll quickly share you this another ISO. link. Okay. ISO one. Mm. Just sharing in this chat. Yeah, Uh, sure. this is, go click on it and download it. If this is not working, then we'll go to evaluation from Microsoft and we'll download it from there. Just download Yeah, and let's see sure. if it works. Click on download.
Just give 6 minutes. Rajuddin, are you able to see screen now? Con- You guys can see screen, Not right? now. No, Vaibhav. Okay, I'm not Chidambar, able to can you see. just stop sharing and again reshare? Just see Sure, if that sure, works. sure. Uh, I think Okay. there is Chidambar, some network issue. That's all. okay, because I can see it. Let's see if that works. No, actually, yeah, I'm able to see. Okay. actually, uh, Hmm. Rajuddin should exit and re-log in. That's So great I idea. rejoin. think Yeah. That would Just solve the issue. rejoin. Yeah, वो बोलने वाला था मैं. Just try. I rejoining this class. भाई मैं Okay. टीम्स इंजीनियर हूँ तो कुछ भी ऐसा है तो हम देख लेंगे. Exactly. nice. चलो admit करते हैं. Vaiva, are you able to see the screen now? Yeah, I can see Yeah, it. Okay. I'm able to see. Now I can able to see the your screen. हाँ. Thank you. I think Chidambaram just resolved as a team senior. Yeah, Good. please raise the ticket, Rajid. To count our efforts. I raised the incident after few minutes Yeah, sure. See, ठीक है तो and राजुद्दीन, disturb the if Wintel you team. missed if you missed anything, अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर लिया, हमने एक डोमेन सर्वर बनाया है, उस पे अब हम सर्वर जी 2019 माउंट करेंगे और हम उसको Mhm. स्पिन अप करेंगे, ठीक है, उस पर लॉगिन करेंगे. तो अभी ओके बेसिक ओके क्या है, भाई ज़्यादा क्या है नहीं कुछ, 4 GB का रैम रखा है और 50 GB का हार्ड डिस्क रखा है इसका, जो भी बस, ठीक है. स्टोरेज में आई थिंक जाओगे ना तो वहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा चिदम्बरम. हाँ, यहाँ पे यू गेट ऑप्शन टू माउंट साटा पोर्ट पे जाओगे. हाँ, यहाँ पे यू नीड टू माउंट, यहाँ पे नहीं, साइड में देखो वो ओके. एक ऑप्शनल डिस्क हाँ, जो है ये ना. वाला हाँ, चूज द उसको डिस्क फाइल. हाँ ये चूज. अभी डाउनलोड होने के बाद हाँ मैप बराबर. मैप करूंगा. अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? ऑल गुड. This startup on what basis do we like judge? Like how do we take it? So one is the default port, which is port 01, okay, where you have kept that Uh-huh. 50 GB हमने दिया था, 50 GB. That is the first port. Mm-hmm. Second port is this, where you are mounting server ISO. ठीक है? Mm-hmm. This is automatically system is designed like that कि 0 पे वो hard disk लेगा and 1 पे external जो भी आप ISO mount कर रहे हो disk पे वो लेगा. Okay. Hmm. So once it's downloaded, we are good. Yeah, just 45 seconds more. Yeah, that's fine. Yeah. That's fine. कल अपनी मीटिंग के बाद मैंने ये पूरा सेटअप किया, पूरा ये लैपटॉप को. इसमें हाँ, पूरा डेटा मैसेज था, किया था उसमें तुमने. निकाल के, हाँ, उसको निकाल के हार्ड डिस्क में डाल दिया. पर्सनल लैपटॉप था ये. इसको हम्म. पूरा कंप्लीटली डेटा पूरा निकाल के वो हार्ड डिस्क में डाल दिया मैंने. डाल के बहुत. इसको फिर पूरा ड्राइव को क्या बोलते, डिलीट करके फिर अनस्ट्रिंग करके उसको अभी एक एक ड्राइव बनाया. मेरे साथ प्रॉब्लम, मेरे पास मैक है, उसमें बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं और आई डोंट मैक. वांट. हाँ, वो मेरा पर्सनल है तो उस पे अभी ये सारा सब सेटअप करना, इसलिए मैं सोच रहा हूँ मेरा एक पर्सनल लैपटॉप है, उसको मैं देखता हूँ, बनाने के लिए देता हूँ, अगर वो सही कर देगा फिक्स तो विल डू इट टुगेदर, मैं भी अपने सिस्टम पे साथ के साथ. ठीक है, तो अब जाओ अपने वर्चुअल पे, सर वर्चुअल इसको बॉक्स पे. किधर भी लगाओ सेफली या डाउनलोड में छोड़ दो डी कुछ. डी में ही रख दो इसको, उठा के एक फोल्डर बना दो आईएसओ का और उसमें रख दो. उसमें अंदर मत जाना, एमईसीएम लैब में मत जाना, बाहर ही रखना उसको, ठीक है. हाँ, कॉपी ओके. कट किया करके डी में बाहर ही रख देना. एक फाइल बना दो, फोल्डर आईएसओ बोल करके, या फाइल जो भी तुमको इजी लगे, ठीक है. जस्ट कीप इट देयर.
ISO कैटेगरी सॉफ्टवेयर, हाँ दैट्स इट, उसके अंदर पेस्ट कर दो। तो इससे क्या होगा, एक ही जगह पे सब तुमको मिल जाएगा। हाँ, ये पूरे अभी हम डाउनलोड किए ना, तो पूरा ये सब हाँ उसको उठा के इधर डाल दूंगा। कभी बस रेफरेंस बस, चाहिए तो किसी को शेयर कर हाँ सकते हैं। करेक्ट। ठीक है, अभी जाओ अपने वर्चुअल बॉक्स में और माउंट करो इस लिस्ट को। डी ड्राइव सॉफ्टवेयर्स सर्वर 2019, ओके ओके ओके। क्लिक ओके। क्लिक ऑन स्टार्ट, ऊपर स्टार्ट दिया हुआ है ना। हाँ उसको एक बार मैक्सिमाइज कर देते पूरा वर्चुअल सॉरी सर, बॉक्स। या शो बटन पे क्लिक करो, स्टार्ट किया था वहाँ कैन यू म्यूट योरसेल्फ प्लीज? someone please speaking and go on. Just wait for some time. ठीक है, now click on next. ठीक है, we'll keep everything as default, कुछ भी ओके change नहीं करना। ठीक है, install now। ठीक है, एक कैच है यहाँ पे, नेक्स्ट मत करना मैं तब तक खोलूँ नहीं। ओके हाँ, नाउ सी, यहाँ पे जो लास्ट में हमें ऑप्शन दिख रहा है राइट, कि जो डेटा लास्ट में है डेस्कटॉप, जो एक्सपीरियंस है उसको चाहो तो एक्सपैंड कर सकते हो, थोड़ा सा एक्सपैंड करो आर्किटेक्चर पे थोड़ा क्लिक करके चिदम्बरम इसको। हाँ, नाउ थोड़ा और विजिबल होगा। अभी इसमें बोला है विंडोज सर्वर 2019 डेटा सेंटर इवैल्यूएशन डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, हमें डेस्कटॉप एक्सपीरियंस पे जाना है, इवैल्यूएशन और डेटा सेंटर वाले। स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन या ओकेसी पे नहीं जाना, डेस्कटॉप एक्सपीरियंस। क्लिक ऑन इट और नेक्स्ट करो। ओके, आई हैव क्लिक द लास्ट वन एंड क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट। हाँ ठीक है, हाँ एक्सेप्ट टर्म्स कंडीशन। नाउ अगेन देयर इज अ कैच, हम अपग्रेड नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी कुछ नहीं है, हम स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, तो हम चूज करेंगे नीचे वाला ऑप्शन कस्टम। ठीक है, क्लिक ऑन कस्टम। ठीक है, या everything is same, we are not changing anything in the disk or drive। ठीक है, और यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं, राइट? ऑल गुड। नो ठीक है, फाइन। अभी यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे, No, no, no confusion. क्लिक ऑन नेक्स्ट। ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, सिस्टम में कॉपी विंडोज फाइल्स एंड ऑल होने में। सर, एक बेसिक क्वेश्चन है, बोल दो। हम्म सर पूछ सकता हूँ? हेलो। हाँ पूछो पूछो, मैं हाँ, तो बेसिकली ये विंडोज विंडोज सर्वर के लिए सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम और अपना यूजर्स के लिए सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है कभी कभी भी। Correct. बेसिकली इज दैट due to because of the features which are for the admin is separate, which is a separate package, उसके लिए वो OS में ये पूरे रहेंगे और लाइसेंस भी सेपरेट लगेगा उसके लिए। दैट इज द डिफरेंस। यस, करेक्ट करेक्ट। अभी देखो, जैसे एज ए एडमिन तुम्हारा कंसोल अलग होगा राइट, बट एज ए क्लाइंट या एज ए यूजर उसका कंसोल अलग रहेगा। तो सर्वर वाइज ऑल्सो, सर्वर क्या होता है, बहुत कैपेबल होता है, बहुत उसके अंदर कैपेसिटी होती है चीज़ों को करने की, राइट? और उसको
अगर बेसिक मशीन पे डाल दिया जाए या बेसिक मशीन का उस सर्वर पे डाल दिया जाएगा तो वो काम नहीं करेगा। तो इसके लिए फीचर वाइज, कैपेबिलिटी वाइज, लाइसेंस वाइज, सारी चीज़ों की वजह से सर्वर का ओएस अलग डिज़ाइन किया जाता है और बेसिक यूजर्स का जो ये होता है वो अलग डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, ओके, तो दैट इज द डिफरेंस। श्योर सर। Okay, so just almost ready. सर मीनवाइल ये कंप्लीट होने से पहले एक्चुअली मुझे बैक एंड कंप्लीटली कुछ पता नहीं है, तो मुझे थोड़े क्वेश्चंस पूछना है। हाउएवर आई थिंक यू विल कवर इट इन लेटर, बट तो मुझे ये पूछना है कि ये अपना एवरी मंथ पैक सॉफ्टवेयर अपडेट आता है बेसिकली, तो वो अपडेट्स अलग है, और विंडोज अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट्स और सॉफ्टवेयर पैकेजिंग, और अपार्ट फ्रॉम दैट विंडोज 10 2021 H2 से 22 H2 को अपग्रेड करना है, वो पूरा कैसा कैसा होता है बेसिकली। सो ये उसके हम लिए कवर करेंगे आगे, यू आर अहेड ऑफ टाइम। हम ओके ये सारा ओके कुछ आगे कवर करने वाले हैं। और हाँ, ओके अभी सॉफ्टवेयर अपडेट का जब मैं सेक्शन लूँगा उसमें मैं बताऊँगा कि क्रिटिकल अपडेट क्या होता है, फीचर अपडेट क्या होता है, और इन कंसोल अपडेट क्या होता है, और हर कैटेगराइज उसका कैटेगराइजेशन, उसकी सिवियरिटी क्या होती है। तो आप जो बात करो सॉफ्टवेयर अपडेट का, जो डब्ल्यू से हम सिंक करते हैं अपने कैटलॉग से, डब्ल्यू से एमईसीएम में, एमईसीएम से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने क्लाइंट्स पे, ठीक है। वो जो ओके सॉफ्टवेयर अपडेट माइक्रोसॉफ्ट एवरी सेकेंड ट्यूसडे जो एवरी मंथ करता है रिलीज, दैट इज टू सिक्योर एंड कीप योर एंड पॉइंट्स की वनरेबल ना हो। बाहर से कोई फिशिंग या कोई अटैक आता है तो आपका सिस्टम डिफेंड कर पाए, मतलब यू हैड दैट डिफेंडर कैपेबिलिटीज। तो बिकॉज ऑफ दैट वो विंडोज अपडेट Hmm. पुश करते हैं। और बाकी जो W1 जो W1 H2 एंड ऑल जो आप कह रहे हो वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर अपडेट करते हैं, तो उसके जिसको हम लोग पुश करते हैं अपने सिस्टम विमला, पे, कैन यू ताकि प्लीज म्यूट योरसेल्फ? सॉरी। वो जब हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क सीक्वेंस बनाएंगे, वो सारा कुछ करेंगे ना, तो उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपडेट्स में इंजेक्ट करते हो, कैसे अपग्रेड करते हैं मशीन्स पे, कैसे वो अपडेट आता है, फिर वो यू गो इन सॉफ्टवेयर सेंटर, यू डाउनलोड इट फ्रॉम देयर, या कई बार ऑटोमेटिकली हम करते हैं तो बैकएंड से वो डाउनलोड हो जाता है। तो वो सब कुछ आगे बहुत सारे सेशन में है कवर करने के ओके लिए। सर, ये टास्क सीक्वेंस भी हम सेलेक्ट करते हैं बेसिकली। वो हम्म, एक अभी इंजीनियर वाइज हम यूसी इंजीनियर हूँ मैं बेसिकली, तो अभी फ्रंट एंड में हम जाके टास्क सीक्वेंस क्रिएट करके लगाते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। तो हम टास्क सीक्वेंस सेलेक्ट करके लैपटॉप इमेजिंग करते हैं फॉर एग्जांपल। हम्म, वो एक हम्म, है, और एक टेक्नोलॉजी है वो इन प्लेस इन इस अपडेट। एससीसीएम। वो कुछ हम्म, बोल रहे कि इट विल गेट डायरेक्टली डिप्लॉयड फ्रॉम द एससीसीएम इटसेल्फ। हाँ, ये yes. इंजीनियर का इंटरवेंशन कुछ So we जरूरत will नहीं do it when we are doing this for Windows 10 to Windows 11 upgrade now. Then we'll do in-place upgrade. तो in-place है। upgrade में ओके क्या होगा? Your system will download the pre-provisioning package in the background. Okay, जब stage हो जाएगा, then it will automatically give you flash. Yeah, automatically it will give you prompt key, save your things and all, and then you click on save. System will auto restart, and backend में क्योंकि वो packages already downloaded रहते हैं, बैकएंड में पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारा विंडोज 10 से विंडोज 11 में माइग्रेट हो जाएगा। ठीक है, सो विल टॉक ऑन दोस थिंग्स लेटर। ओके सर, एक और एक ये ऑप्शन ये है कि ओयू में कंटेनर्स क्रिएटेड है एक्चुअली एक्टिव डायरेक्टरी में। तो कभी भी वो सॉफ्टवेयर जाके यूजर को ऐड करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर ऐड हो जाता है। वो कैसा, एक्चुअली मुझे वो सिंक समझ में नहीं आया, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी एससीसीएम क्लब इंटीग्रेटेड रह के उसमें ओयू बना के उसमें पॉलिसीज भी डाल के कैसा वो कैसा वो चलेगा सारा बैकएंड में, मुझे समझ में नहीं वो आया सारा मुझे। क्यूरियोसिटी का हम सोल्यूशन देंगे आगे। ठीक है, ओके सॉरी, मैंने पूछ no लिया problem. शायद, क्योंकि No, see, curiosity is good. It means that you are attentive. It is very good.
बट कहते ना कि शाम का खाना मैं सुबह तुमको नहीं खिला सकता, यू नीड टू वेट टिल इवनिंग, Okay. यू नीड टू कुक दैट फूड, देन यू नीड टू ईट। तो उसका जो टेस्ट आएगा, उसका जो मजा आएगा, वो तभी आएगा। ठीक है। Sure, तो sure, sure. you just need to be थोड़ा सा, you need to hold your, कहते हैं ना, Yeah. क्यूरियोसिटी फॉर द टाइम बी। बट हाँ, मैं हर चीज़ कवर करूँगा A to Z, डॉट बाय डॉट, ताकि हर चीज़ कनेक्ट कर सको। कल को ये क्वेश्चन नहीं उठेगा कि अभी मैं बताने को तो मैं बता दूं कि हाँ वो कलेक्शन में होता है, फिर वो डिवाइसेस सिंक होती है, OU से नहीं आती सर, है मुझे बस कलेक्शन चेक में। करना था कि ये पूरे भी तो कवर होंगे, क्योंकि हाँ, मेरे को नहीं एक्सेस नहीं है। सब, देखो मैंने उस पे कंटेंट्स डाला है। अगर क्लासरूम में जाओगे ना, तो क्लासरूम में स्क्रॉल करना, जो मेन थंबनेल है ना, जो बड़ी सी पिक्चर है, उसके नीचे एक लिंक दी हुई है कोर्स कंटेंट की, उसको एक बार क्लिक ओके, करना, तो उसमें सारा कुछ मैंने मेंशन किया हुआ है कि क्या क्या हम कवर करने वाले हैं कोर्स कंटेंट्स में। ठीक है। तो ओके। एक बार वो विजिट करोगे ना, तो उसमें सब मिल जाएगा, क्या क्या है क्या नहीं पढ़ाने वाले, तो सब कुछ कवर है, एवरीथिंग। श्योर, श्योर सर। ओके। ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट देयर, 54%, 55%। ठीक है, अभी अगर मैं रिकॉर्डिंग करता तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं पॉज कर देता, बट सिंस वी आर इन लाइव सेशन, तो मैं चाहता हूँ कि वेट करो, ताकि पता चले कि हमने सेटअप करने में कितना टाइम जाता है। ठीक है। Rajuddin is on hold. Okay, I think he's on the call. ठीक है, that's good. अच्छा, one more thing is आपको ओके, लेट्स डू नेक्स्ट सेशन जैसा भी होगा। MECM सेटअप करने में और क्लाइंट में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, MECM में थोड़ा सा ये अपडेट होने में टाइम जाएगा, तो हम लोग पहले ही शुरू कर देंगे, ताकि हमारा बीच में जैसे सेशन शुरू होता है हम लोग कर देंगे। ठीक है। Sir, okay, week पे only weekend classes or weekday classes also? I just checked with everyone. So Friday and Saturday we are available, and personally I'm also available on those days. Sunday I just want to keep for my family, Okay, good, है ना? And good. rest of the day I'm Yeah. going to office. So for me coming back घर पे आना फिर पढ़ाना थोड़ा सा exhausted हो जाएगा. So I thought of कि Friday Mm-hmm. थोड़ा सा chill mood में Okay. रहते हैं, and Saturday again we are free. तो Saturday को Yeah, नहीं होगा we तो are free. Yes. हम 2 घंटे भी सेशन मॉर्निंग में भी रख सकते हैं, इवनिंग, एज एज पर योर फीडबैक। ठीक है, सैटरडे हम, मेरी भी फिजिबिलिटी No जैसी problem. रहेगी, Yeah. आई मेंशन। Yeah. Friday, Saturday, I'm okay. फ्राइडे सैटरडे एवरीवन इज ओके, दैट्स व्हाई आई केप्ट दिस। Yeah. 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 Done. सो इफ यू हैव मोर प्रोफेशनल्स दे वांट टू ज्वाइन, तो लेट मी चेक देयर बैंडविड्थ, उसके बाद फिर मैं उनको ऐड करता हूँ इसमें। अच्छा, ये इतना टाइम इसलिए लगा रहा है क्योंकि दिस इज फर्स्ट टाइम वी आर सेटिंग इट अप, और सर्वर पे कॉन्फ़िगरेशन में ज़्यादा टाइम जाता है इन कंपैरिजन टू यूजर्स नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो यू नीड टू बी लिटिल पेशेंट। ओके, ऑलमोस्ट डन हो गया है, फिनिशिंग अप। Yeah, it's restarting. हाँ, yes. Okay, press any key. Okay. ओके, जस्ट आपका वर्चुअल बॉक्स बता रहा है कि क्या करना है आपको, कैसे इस पे जाना है, राइट क्लिक, टूल्स, कंट्रोल। तो ठीक है, विल डू इट लेटर। Cancel. हाँ, जस्ट कैंसिल।
Vaibhav, one small question, maybe it is silly. Does Yeah. Oracle uses SCCM? Oracle. Yeah, Oracle users or Oracle? I'm sorry, can you come again? Oracle. I'm not talking about Oracle. Oracle as a How do company? they manage the yeah? How do they manage the software? Because I heard that they doesn't use SCCM. I'm not sure. No, actually, typically I also didn't heard here ki they use it ki because this is something they have their own suite of management and cloud tools. If I remember, there is like Okay. Oracle Enterprise Manager and Oracle Cloud Infrastructure. So they are managing deployments, Uh-huh. configuration, everything. If you go with Tanium and all, so they have their own infrastructure, they have their own applications. Patch My PC, they have their own. So SCCM, potentially IBM Big Fix is also there. So they don't use it. Why? Because they are competitors, right? So Oracle sell their own Mm-mm. products. So they why they use their competitors this product. Correct. Yeah. This is where see Microsoft के products कहाँ पे चलते हैं ना when you are already there in their ecosystem, ठीक है? So you are Mm-hmm. bound to use now. Everyone is bound to use Intune. Why? Because they are primarily they were available in this as Microsoft OS में थे. Then they had other products also. Go on, click next. So did it start again? Start back or? Install now. ऐसा तो नहीं होना चाहिए. तो already installed किया है, right? Hmm. Setup is starting. Okay. Not sure. Did we miss anywhere? Oh, it came back again. Something is wrong, I think. Click on last one. नहीं ये तो Yeah. होना नहीं चाहिए. I think you need to get the user this prompt where you need to set users and everything. Accept the terms condition. Custom. हाँ ये तो नया आया था. ये sir, shall I select the partition too? नहीं, I think कुछ तो गड़बड़ हुआ है. काम करो इसको रीस्टार्ट मारो. आ, एक बार ऊपर इनपुट पे जाना, इनपुट पे क्लिक करना, क्लोज इट. Shall I close this one? हाँ क्लोज इट. क्योंकि दो दो पार्टीशन क्यों दिखा रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए. ये भी close करो. हाँ क्लोज इट. हाँ हाँ कंटिन्यू. प्रेस एनी की. When I pressed, it went to that particular another setup. So this time I did not press anything else. आई थिंक जो लास्ट में प्रॉम्प्ट आया था ना, वी मिस दैट. आई थिंक दैट कैप्चर हम बात करने लगे, वो वी नीड टू क्लिक ऑन कैप्चर आई बिलीव. हाँ नहीं आया ना, यही तो कह रहा हूँ मैं, हाँ कुछ आ गया आ गड़बड़ गया. हुआ. ठीक है. विल कीप वन पासवर्ड. ठीक है. आई विल जस्ट राइट इट डाउन आल्सो. सो विल कीप इट लाइक व्हाट इज द सिंपलेस्ट पासवर्ड यू गाइस नो? चलो हम आप I बताओ कौन सी I पासवर्ड. डबलेट ऐसा कुछ इंडिया डबलेट के ऐसा. ठीक है चलो मैं लिख लेता हूँ क्योंकि मैं भूल जाऊंगा. Tell everyone what you type as a password. Yeah, IND @ So I is capital. डबलेट डबलेट. एक मिनट. डबलेट. I'll show this one. So Yeah, it's better. yeah, गलत लिखा है. गलत. इंडिया में I should be, I think, नहीं नहीं capital. मैंने ओके नहीं गलत आया. एक इंडिया मिनट. और इंडिया का आई कैपिटल करो. आई ओके. एंड डी आई हाँ. कैपिटल रखो. डबलेट एक बार चेक कर लूंगा. ये @ एक मिनट सॉरी.
आपका @ का कुछ वो कीबोर्ड चेंज है यूके का ना, इसके लिए शायद। एक मार एक रहा बार हूँ मैं। पहले हाँ एक बार नोटपैड खोलो, जस्ट ओपन ए नोटपैड। हाँ, इस पे टाइप करो पहले। ओके, नाउ टाइप कैपिटल आई। हाँ, NDI। हाँ, इधर सही आ रहा है। IA नहीं आया। IA किधर है? हाँ, मैंने I, IND लिखा, IND@WWF लिखा हूँ। अच्छा, पूरा इंडिया IND। बोल के हाँ, लिखूं क्या? पूरा इंडिया बोल के लिखो, क्योंकि वर्ड फिर वो मिस हो जाएगा। इंडिया ही लिख दो नहीं। पूरा। ओके। INDIA@8888। ओके फाइन, आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन। या ठीक है, कैपिटल आई है। ठीक है, क्रिएट अ पासवर्ड। IND, ये इधर दूसरे नहीं तो एक काम करो, speaking कॉपी कर something लो, else। उसको पेस्ट करो, कॉपी करके अगर हो जाए तो कॉपी पेस्ट। पेस्ट नहीं हो रहा है I don't कॉपी think so. में। It will paste it. It या doesn't एक paste. In the input option on top, click on input on the top of इन, the Oracle ओके virtual box. Click on input ओके keyboard, and do you have any settings here? This is ओके। software. हाँ, just try using this caps on, because this is first time now. So बाद में जब login हो जाएगा, then you will get options inside. Shift and I. छोटा वाला। ओके, जस्ट अ मोमेंट। कैप्स Next. Hmm. TIA Shift. शिफ्ट। Just check. हाँ, ओके, कॉपी अभी पेस्ट तो कॉपी। नहीं होगा, तो मैनुअली टाइप करना पड़ेगा नीचे भी। हाँ, कॉपी पेस्ट से नहीं हो रहा है। ओके, नहीं और एक होगा। बार टाइप करूंगा। ठीक है, perfect. ओके, Okay, finish it. फाइनली। ओके, Now go to input on top, keyboard, do Control Alt, insert Control Alt delete. Click on that. Type the password. मेरे कीबोर्ड में ऐसा ही आ रहा है। एक मिनट। कीबोर्ड में प्रॉब्लम है। ठीक है, नहीं तो ये लॉगिन होने के बाद डोमेन सेटअप हो जाएगा, फिर हम MECM सेटअप करेंगे। मैं इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन बता दूंगा, बाकी या नेक्स्ट सेशन पे करें, क्योंकि फिर मिस नहीं होना चाहिए किसी को। ठीक है, चलो अभी पासवर्ड डालो, लॉगिन करो। ओके, परफेक्ट। सो विंडोज सर्वर आपका
2019 is successfully installed on domain. This is our first virtual machine. ठीक है. Next session पे we'll try to set up MECM PS cloud. इसको leave as it is. Sorry. Okay. ठीक है. Don't touch anything without my Okay. knowledge. ठीक है. तो अभी फिलहाल के लिए next time we will install MECM client machine और फिर प्रॉपर पूरा डोमेन का और माइक्रोसॉफ्ट MECM PS का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे. ठीक है. एवरीथिंग विल सेट अप. आज के लिए वी आर डन. ओके, लेट्स मीट अप नेक्स्ट फ्राइडे और कोशिश करेंगे कि टाइम पे आएंगे और बातें कम काम ज़्यादा. ठीक है. ताकि जल्दी सेटअप. आज इंट्रोडक्शन था. आई रियली लव्ड इट कि सबने अपना अपना ओपिनियन दिया, सबने अपनी बातें रखी. आई रियली अप्रिशिएट इट. नेक्स्ट टाइम फ्राइडे बी प्रिपेयर्ड. विमला आप भी और राज को भी देखेंगे अगर वो अपने लैपटॉप अरेंज कर पाए. सो वी विल ट्राई. और मैं भी देखूंगा कि अगर मेरा लैपटॉप अवेलेबल रहा सो वी विल डू इट टुगेदर. ठीक है. Yeah, sure. Thank you, Vaibhav, for your time. Thank you. Thank you.